everyone, welcome back to my channel. In today's video we're gonna do a purple slash lavender slash lilac eye tutorial. It's super easy, it's not something overwhelming also, and we're doing this because I felt like and as you can see, like my face and my hands are like clearly so tanned because I've been out in the sun and it's just horrible. We don't want to talk about it, and I've been breaking out a lot as well because I've been staying out a lot. I've been working a lot, so I'm more prone to the pollution these days. So which is why बहुत सारा हो रहा है, and you can clearly see the difference, right? But it's okay, we're gonna do something about it, and we're gonna fix it, okay? So let's start. First of all, I washed my face, I've applied the moisturizer. I've used the Cetaphil moisturizing lotion, which is my favorite. मैंने बहुत बार रिव्यू भी कर दिया उसको, so we're using that. I've applied that already on my skin. Next, I'm taking this Insight Pro Concealer palette. It has all the shades that we need, and then I'm gonna use a brush, very little. I'm gonna apply it over here where I am breaking out or I have spots. So उधर मैं थोड़ा सा apply कर दूँगी, and under the eyes also because बहुत अजीब स्किन हो गई है मेरी. लाइक इतना सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ये हो रहा है, तो इट्स ओके. एनीवेज, आई हैव अप्लाइड दिस ओवर हियर, एंड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रेडनेस दिख रही है, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस लाइलैक एंड ग्रीन शेड, जो उसको कैंसल आउट कर देगा. सो आई एम अप्लाइंग दैट. इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, एंड मेरा नोज़ भी रेडी हो चुका है. सो डोंट वरी अगर अभी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस एज यूजुअल बिकॉज इट्स गोना बी फाइन. आई एम यूजिंग दिस बॉर्न दिस वे मल्टी स्कल्पटिंग कंसीलर. दिस इज़ इन द शेड लाइट बेज, एंड आई एम गोना लाइटली अप्लाई इट टू द एरियाज वेयर हमने ये कलर करेक्टर लगाए हुए हैं. We're gonna let it sit for 20 minutes, sorry not 20 minutes but about 20 to 30 seconds, ताकि ये कंसीलर थोड़ा थिक हो जाए. उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे. About 20 seconds हो गए हैं. So now we're gonna lightly dab this, and just ऐसे ही हमें टैप करना है इसको. we are not moving the product because अगर इसको ऐसे स्वाइप करेंगे, मूव करेंगे, तो जो ये उसके ऊपर कंसीलर लगा है वो तो हिल ही जाएगा, नीचे जो हमने लगाया है वो भी दिख जाएगा. वी आर ट्राइंग टू कंसील दिस, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस स्टेप. You see, our skin is looking a little better. Now we move on to the foundation. For foundation, I'm using this L'Oreal Infallible 24-hour Fresh Wear foundation. This is in the shade 130 True Beige, and I'm just gonna take a little bit on the back of my hand, and this shade might be a little light for me. Yeah, okay, it's a lot light, so we're gonna mix something with this. This looks weird, right? And it looks like बहुत light. So this shade is a bit light for me. I'm using this K Beauty का shade 130Y medium. So this is a bit on the yellow tone. So ये जो बहुत lightness है उसको cancel कर देगा. उसका भी मैं बहुत छोटा pump I'm gonna take on the back of my hand, and then just place it like this so that दोनों mix up होके ना एक perfect shade बन जाए. You see how dark this shade is for me. So just to balance it out, I'm gonna dot it everywhere as well. I'm using this brush and then just blending it.
भी कई जगह जगह पे मुझे लाइट लग रहा है, सो आई एम जस्ट, मैंने थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लिया है, उसमें ये ब्रश थोड़ा सा ऐसे डिप करके देन आई एम जस्ट अप्लाइंग वेयर आई फील कि थोड़ा लाइट ज़्यादा हो गया है, तो उसको नॉर्मल अपना स्किन टोन करने के लिए आई एम यूजिंग थोड़ा सा अमाउंट. Next I'm using this Swiss Beauty concealer, liquid concealer. This is in the shade 02 and I'm just gonna apply a little bit under the eye and thoda sa over here because we need a base for our eyeshadow. You can use an eyeshadow base also, but I mean it doesn't make much of a difference, so I generally use this and I'm just gonna blend it now. Next I'm using this Blatant by Benefit and applying it on my cheeks. उसको भी blend कर लेंगे अच्छे से. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस OG रिमल का स्टे मैट पाउडर, जो मेरा टूटा फूटा है क्योंकि मैंने बहुत गिरा दिया है, तो उसका ढक्कन तो ऐसे 2 टुकड़ों में हो गए. मैंने उसको चिपकाया वापस, बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट. आई हैव ऑलरेडी हिट पैन एज यू कैन सी एंड उसमें से एक ब्रश लेके देन टैप ऑफ द एक्सेस एंड देन जस्ट सेट इट. सबसे पहले आईज़ को सेट किया बिकॉज उसमें ज़्यादा जल्दी क्रीजिंग हो जाती है. बाकी फेस इज़ फाइन. आई लाइटली डू दिस बिकॉज मेरी ऑलरेडी ड्राई स्किन है, सो आई डोंट नीड मच पाउडर. अगर आपकी ऑयली स्किन है सो यू कैन गो इन अ बिट हैवी, बट आई जस्ट लाइटली डस्ट इट एंड इट्स डन. क्योंकि अगर ज़्यादा लगा लूँगी तो फिर और बहुत ड्राई हो जाएगा मेरा मेकअप एंड इट डजंट लुक नाइस. फॉर द ब्राउज आई एम यूजिंग दिस उषा's पेंसिल. इसका नाम चला गया है, सो आई डोंट रियली नो, बट इट्स अ रियली फाइन टिप पेंसिल. सो आई एम जस्ट गोना शेप माई ब्राउज अ बिट. For the eyes I'm gonna use this Huda Beauty Rose Quartz eyeshadow palette, and क्योंकि we are going for lilac lavender shades, this is perfect. And I'm gonna use a transition shade which is called Radiate. ये वाला जो शेड है उसको मैं लूँगी and tap off the excess and then just apply it over here on the crease. इसको अच्छे से राउंड सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड कर देंगे. एक तो ये विंडशील्ड मोशन होता है ये वाला, और उसमें भी यू कंटिन्यू डूइंग ऐसे गोल 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 गोल. सो दिस इज सर्कुलर मोशंस प्लस अ विंडशील्ड मोशन. विंडशील्ड ऐसे अपना गाड़ी का कांच साफ करते हैं ना, वैसे वाला. सो यू हैव टू मिमिक दैट एंड देन अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू डू दिस, बहुत परफेक्ट ब्लेंडिंग आएगी आपकी. Next I'm gonna use this shade, this lavender shade called Serenity. उसको एक दूसरे ब्रश में लेके I am not tapping the excess of this because I want more pigmentation on this, इसीलिए very lightly इसको अच्छे से यहाँ पे पूरा अप्लाई कर दूँगी. क्योंकि अब अगर आप एक्सेस टैप ऑफ कर दोगे तो पूरा उड़ जाएगा एंड आपको इतना पिगमेंट फिर नहीं मिलेगा. दोनों आईज पे हो गया है. नेक्स्ट आई एम गोना यूज द सेम शेड ऑन द लोअर लैश लाइन. इसको कनेक्ट कर देंगे इधर से यहाँ पे. After this, you can use an eyeliner if you want, but I'm just gonna use an eyeshadow, a mix of this in this shade, and take an angular brush like this. It's a very thin brush. So using that, I'm just gonna mimic an eyeliner using the shadow.
Now that this is done, I'm just gonna use this lighter shade of this and then just apply it on the inner corner of the eye and thoda sa under the brow. I'm gonna apply this Inglot blush. It's a purplish lilacish color, and then just apply a little bit. Next, I'm using this Essence Lash Princess mascara. This is the green one. This is the false lash effect mascara. And then I'm just gonna apply it. So I've applied lashes, and I'm gonna use this Vatten Italy's lipstick in the shade Soft Nude. This is shade number 12. On top of this, I'm going to use this Sugar Cosmetics Smudge Me Not lipstick in the shade Rose Repose. Just a light dab of it. And lastly, I'm going to set my face using this L'Oreal Infallible Mattifying Setting Spray. So this is the final look. I hope you guys like it. If you did, then please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. And I will see you in my next video. Till then, bye bye. Take care.